मीडिया का क्या रोल है गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में? अब मीडिया जो है एक बड़ी जेनेरिक सी टर्म है, लेकिन इस मीडिया में बहुत से बहुत नॉट ओनली वन शुड से इंस्टीट्यूशन, बहुत सी नई डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आई हैं। बहुत सी इंफॉर्मेशन, we are surrounded by information and this is an age in information and the problem is कि इतनी इंफॉर्मेशन में आप किस तरह से इंफॉर्मेशन को सिफ्ट करेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो सही इंफॉर्मेशन है और कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। मीडिया, सोशल मीडिया, मीडिया प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सो मीडिया की एक बड़ी डाइवर्सिटी हमारे सामने है। फेसबुक, ट्विटर, Flickr, LinkedIn, Instagram and you name it, ये एग्जिस्ट करते हैं। हम सब इससे फेमिलियर हैं, इस्तेमाल करते हैं इनमें से बहुत सी चीज़ों को, और हमें इनके फ़ायदे और नुकसान अगर नहीं मालूम है और उसके बगैर हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आई थिंक वी शुड नो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग मीडिया एंड how it affects our life and how it affects the working of government as well, because governments as well are using Facebook, they are using Twitter, so they are using LinkedIn and they are using other forms of media. So there, and then of course the electronic media which is there, which acts as a watchdog. प्रोज क्या हैं, पहले इसको हम देखते हैं। इसके सबसे बड़े प्रोज ये हैं कि इंफॉर्मेशन जो है बहुत जल्दी से डिसमिनेट होती है। फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस द इंफॉर्मेशन इज डिसमिनेटेड। अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, इंस्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। यू आर सिटिंग हियर एंड समबडी इज ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, द इंफॉर्मेशन इज इंस्टेंट। यू कैन वॉच इट, you can send it in words and you can send it in pictures and you can see it alive. So these are the pros. But media acts as a watchdog which can only raise voice. Electronic media की बात कर रहे हैं। Electronic media या दूसरा जो media की forms हैं, they can raise voice and they can raise noise. और media ने revolution में भी हिस्सा लिया है। So it's a very important and a strong source that can influence governance or can improve governance. It can highlight inside working and decisions of the government. WikiLeaks is an example where information, inside information of the National Security Agency was leaked out. So it is because of this media. So बहुत कोई चीज़ सीक्रेट नहीं रही है मीडिया के सामने। It's a plus thing and it's also a negative thing. Shows injustice of institution. A governmental institution का अगर injustice है, it shows, it brings it into the light of people. There was a time when nobody knew what was happening. It shows positive actions of the government as well. अगर कोई positive government ने step लिया है, उसको भी highlight करता है। Does it matter to the government? क्या governments को ये matter करता है? अगर openness है, transparency है, तो एक gradually ये वक्त आएगा जब government इससे influence होंगी. For the moment, the governance, if it is improving, perhaps there is some role of media in improving the functioning of the government. Now, what are the cons? What are the negative sides of a media? It can sometimes overplay it can overplay an event which may not be so very important. So media में जो चीज़ flash होती है, चूँकि लोगों ने media से information लेना ज़्यादा easy है, accessible है, पढ़ना इतना नहीं पड़ता, सिर्फ सुनना पड़ता है, तो आप media इसको overplay भी कर सकता है। And maybe it is not objective sometimes. शायद मीडिया कोई साइड लेता है, शायद मीडिया कोई लाइन ले सकता है. So the objectivity of the media is in question. It is not that media is always impartial. It can become partial. So if people are not well informed, they can be trapped into the subjectivity of media.
Too much negativity is there, too much, sometimes certain things are highlighted which are not very palatable, and negativity seems to be created. Too much confusing information. For a common citizen who is not very close to reading to the print media or to the other print material or to the other information, this information could be confusing. And when there is a plethora of information, it becomes difficult for citizens to understand that what is right information and what is not so right information. So all in all, what one can say is that media does play a role in improving, can play and plays a role in improving governance, but one has to understand the pros and cons that media plays in improving governance. That's the bottom line in case of media improving the governance.